Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to the course of Literary Criticism 1. In today's class, we are going to read about The Republic by Plato. In today's class, we are going to talk about The Republic, poetry is imitation, and at the very end of the class, we will discuss Plato's objections on poetry. The Republic by Plato. Republic was actually a work and essay written by Plato where he presented his idea of the ideal world. The Republic is written in Socratic method जो कि actually dialogue के form में लिखा गया है. If we look at, we read the Republic, we see that there are different questions asked by the different participants. जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम देखते हैं हमारे पास सोक्रेटिस है एक कैरेक्टर, हमारे पास ग्लॉकन है, इसके अलावा और भी हमारे पास कई कैरेक्टर्स है इसमें जो कि क्वेश्चंस आंसर करते हैं. ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर सोक्रेटिस देता है. इसमें असल में प्लेटो अपना ही आइडिया प्रेजेंट करता है. टीज कैरेक्टर को यूज करते हुए वो अपने आइडियाज प्रेजेंट करता है. द आइडियल वर्ल्ड, द रिपब्लिक, वो कहता है कि मेरे आइडियल वर्ल्ड में देर आर मैनी एक्सेलेंसेज. However, he says that the excellence that I love the most in my republic or in my ideal world is the rule about poetry. He says that among all the excellences, the rule about poetry is the best. The rule about the poetry is the one that I love the most. Now, what is the rule about poetry? The rule was actually the rejection of poetry. He banished poets and poetry from his ideal world. Hither, why did he banish poets from his ideal world? Because he was of the view that poetry is imitation and poetical imitations are ruinous to the minds of the hearers and mind of the different readers. अगर एक तरफ हम देखें तो he rejected poetry, he was against poetry, but he said that I admire Homer, I love Homer. Lekin still he rejects poetry, still he banishes poets and poetry from his ideal world. Over here he actually discusses man with truth. वो कहता है कि अगर आपके सामने on one side you have a man and on the other side you have truth, which one would you support? तो वो यही क्वेश्चन करता है कि a man is not to be reverenced more than the truth, and therefore I will speak out. He said that although I admire Homer, although I love Homer, but I'll speak the truth. And he was of the view that a man is not to be reverenced more than the truth. आप हमेशा truth के साइड लेंगे, आप एक individual का साथ नहीं देंगे. The idea of bed and the idea of table. Now, when he says that poetry is imitation, he describes it and explains that how poetry is imitation, how one can say that poetry is imitation. Now, in order to explain this, that poetry is imitation, he talks about the idea of bed and the idea of table. वो कहता है कि हमारे पास बेड का एक आइडिया है, हमारे पास टेबल का भी एक आइडिया है. वो कहता है कि if we look at the idea of bed or the idea of table, we see that we have just one idea of bed, but we see that we comprehend different object under this one idea. For example, अगर हमारे पास बेड का एक आइडिया एक है, लेकिन डिफरेंट किस्म के भी अगर आपके साथ बेड्स हों तो आप उन्हें बेड ही कहते हैं. जैसे वुड का बना हुआ बेड, ग्लास का बना हुआ बेड और स्टील का बना हुआ बेड, ये डिफरेंट बेड्स हैं. इसमें डबल बेड, सिंगल बेड और ये सिंपलेस्ट जो बेड्स होते हैं वही. ये सारे अगर आप देख लें तो एवरीवन विल कॉल इट बेड्स, कहेंगे कि बेड है, लेकिन उसके भी जो मेन आइडिया है दैट इज जस्ट ओनली वन आइडिया. वो कहता है कि गॉड गॉड ने जस्ट वन आइडिया दिया. अगर इफ वी हैड गिवन more than one ideas, so it would be difficult for all the humankind to determine which one is the real one, which is the ideal one. तो इधर और here वो कहता है the idea of bed. अगर एक आइडिया बेड का आप प्रेजेंट करें फिर भी आप उसको बेड ही कहते हैं. इज इट अ रियल वन? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ रियल वन. On the other hand, there is a bed that is made by a carpenter. आपके सामने एक बेड पड़ा हुआ है जो एक कारपेंटर ने बनाया हुआ है. आपसे मैं
क्या कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, आपके सामने बेड पड़ा हुआ हो, कारपेंटर ने बनाया हुआ, यू वुड कॉल इट बेड, वो भी बेड होता है। लेकिन प्लेटो आस्क दिस क्वेश्चन, इज इट अ रियल वन, क्या ये रियल बेड है? तो एवरीवन वुड आंसर दैट इट इज नॉट द रियल वन। प्लेटो भी कहता है कि जो कारपेंटर ने बनाया है, दैट इज नॉट द रियल वन। उसके बाद ही गोज वन स्टेप अहेड, कहता है देयर इज अ मेड बेड मेड बाय अ पेंटर। एक पेंटर है, उसने बेड बनाया हुआ है। आपके सामने मैं वो दीवार पे लगा दूं, आपसे पूछूं कि व्हाट इज देयर इन दिस पेंट, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब क्या होगा अगर आपके सामने वो मैं लगा दूं, किसी ने पेंटिंग की हो, वो पेंटिंग का मैं आपसे पूछ लूं, तो यू वुड कॉल इट बेड, कि ये बेड है। लेकिन वंस अगेन ही आस्क्स दिस क्वेश्चन दैट इज इट अ रियल वन, तो वो खुद कहता है कि नो, इट इज नॉट अ रियल वन। अगर हम देखें तो देयर आर थ्री बेड्स एंड थ्री मेकर्स ऑफ बेड्स। एक तीन बेड्स हैं और उसके तीन मेकर्स हैं। एक गॉड है, सेकंड नंबर पे हमारे पास कारपेंटर है, थर्ड नंबर पे हमारे पास पेंटर है। तो वो कहता है कि जो आइडिया देता है वो क्रिएटर देता है, ह्यूमन मेकर जो होता है वो एक्चुअली कारपेंटर है, और जो पेंटर है वो इमिटेटर है। गॉड द क्रिएटर, he gave just one bid only, the idea of one bid only. If more than one, which is the ideal one? Confusion, which one to copy? अगर गॉड ने डिफरेंट आइडियाज दे दिए होते एक से ज्यादा, तो कंफ्यूजन तो होती ना। और बंदे, अगर कारपेंटर बनाता तो वो कहता कि कौन सा आइडियल वन है, किसको मैं कॉपी करूं। द कारपेंटर, जिसको हम द ह्यूमन मेकर भी कहते हैं, और द पेंटर और द पोएट, तो उसको इमिटेटर कहते हैं। Over here, this sentence is very much important, and the tragic poet is imitator, and therefore, like all other imitators, he is thrice removed from the king and from the truth. इसके बाद वो फिर इस पॉइंट पे आता है कि ट्रेजिक पोएट जो होता है वो इमिटेटर होता है, और सारे इमिटेटर्स की तरह वो थ्राइस रिमूव फ्रॉम द किंग एंड फ्रॉम द ट्रुथ एंड फ्रॉम द रियलिटी होता है। Now there is a question, does painter poet imitate that which originally exists in nature, or only the creation of artists? तो वो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे पास पेंटर्स हैं या पोइट्स हैं, क्या वो आइडिया को कॉपी करते हैं, या वो जो डिफरेंट आर्टिस्ट ने बनाई हुई होती है क्रिएशन, वो कॉपी करते हैं? डू दे इमिटेट रियलिटी और अपीयरेंस ऑफ रियलिटी? देखें, वो हमेशा अपीयरेंस ऑफ रियलिटी को ही कॉपी करते हैं। जैसे बेड है तो उसकी पेंटिंग बना ली। देखें, बेड इज द अपीयरेंस ऑफ रियलिटी, बेड इज नॉट रियल, बेड इज नॉट रियलिटी। प्लेटो रियलिटी एक्चुअली आइडिया को कहता है, आइडिया इज रियल, आइडिया इज द ट्रुथ। ऑब्वियसली द क्रिएशंस ऑफ आर्टिस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ रियलिटी, तो वो आर्टिस्ट के क्रिएशंस को और उसके साथ साथ अपीयरेंस ऑफ रियलिटी को कॉपी करते हैं। Poetry is imitation. Poetry is a powerful source in molding public opinion. Okay, it danger to his ideal city, ideal state, ideal world. Poetry is the mother of all lies. देखिए सारे उसके poetry पे objections हैं कि it is the mother of all lies. It is dangerous to his ideal society, ideal city. Thank you very much.